See, laboratory diagnosis of syphilis is very important. Syphilis is a STI, it's a sexually transmitted infection. The causative agent is Treponema pallidum. ये जो pallidum है, this word is used because it has pale staining property. ठीक है, pallidum का मतलब pale staining property. So syphilis is a sexually transmitted infection. The causative agent is Treponema pallidum. The word pallidum refers to pale staining property. Now let's see it laboratory diagnosis. So first thing is microscopy. Can be dark ground microscopy, direct IF staining for Treponema pallidum, that is DFATP, or silver impregnation method, in which we use Lev Aditi stain for tissue section and Fontana stain for smear. So microscopy में dark ground microscopy, direct IF staining for Treponema pallidum, that is known as DFATP, and silver impregnation method. Lev Aditi stain is used for tissue section and Fontana stain is used for smear. See, this is how Treponema pallidum looks on dark field microscopy. The background is dark, so this is the dark field microscopy of Treponema pallidum. Okay, on dark background it looks slender, flexible, spirally coiled bacilli with tapering ends measuring 6 to 20 micrometer in length and contains 6 to 20 spirals. So this looks like slender, flexible and spirally coiled bacilli with tapering ends. The length is 6 to 20 micrometer and it has 6 to 20 spirals. So it is slender, flexible, spirally coiled bacilli with tapering ends. Remember, treponemas can not be visualized on light microscopy. ठीक है, इसलिए इसके लिए डार्क माइक्रोस्कोपी करते हैं. ये जो ट्रीपोनीमा पैलिडम है ये 3 टाइप का मोटिलिटी शो करता है. सबसे पहले स्लो टू रैपिड फ्लेक्शन एक्सटेंशन टाइप ऑफ मूवमेंट, स्लो टू फास्ट फ्लेक्शन एक्सटेंशन टाइप ऑफ मूवमेंट. सेकेंड इज रोटेशन अलॉन्ग इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस or corkscrew motility. Corkscrew motility means rotation along its longitudinal axis. And third is rotation may be accompanied by soft bending at right angles to the midpoint. So there are 3 types of motility. First one is rapid and slow to rapid flexion extension type of movement. Then corkscrew motility, that is rotation along the longitudinal axis. The third is rotation accompanied by soft bending at right angles. The sensitivity of dark ground microscopy approaches 80%. Sensitivity is 80%. It will maximum sensitivity can be 80% with a detection limit of 10 to the power 4 bacilli per milliliter. So the detection limit is 10 to the power 4 bacilli per milliliter. दिखता कैसे? स्लेंडर, फ्लेक्सिबल, स्पाइरली कोइल्ड bacilli with tapering ends, length 6 to 20 micrometer and it has 6 to 20 spirals. Then the second thing is direct fluorescent antibody staining for Treponema pallidum, that is DFATP. DFATP stands for direct fluorescent antibody staining for Treponema pallidum. See, this is the direct fluorescent antibody staining for Treponema pallidum. Okay. This is direct fluorescent antibody staining for Treponema pallidum. They appear as distinct, sharply outlined, apple green fluorescent colored bacilli. So what's the color? Apple green fluorescent colored bacilli. Treponema pallidum appears as distinct, sharply outlined,
distinct, sharply outlined apple green fluorescent colored bacilli. The third method is silver impregnation staining. जो ट्रीपोनीमा पैलिडम होता है वो ऑर्डिनरी स्टेन नहीं लेता है, इसलिए वी यूज़ सिल्वर इम्प्रेगनेशन स्टेन. ये जो सिल्वर इम्प्रेगनेशन स्टेन है इट इज़ यूज टू इंक्रीज द थिकनेस. ये सिल्वर नाइट्रेट को मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट करता है विच इज़ डिपोजिटेड ऑन द सरफेस, जिसके कारण थिकनेस इंक्रीज होता है. लेव अदिति स्टेन इज़ यूज्ड फॉर टिश्यू स्टेनिंग. लेव अदिति स्टेन इज़ यूज्ड फॉर स्टेनिंग टिश्यू सेक्शन. और जो फोंटाना स्टेन है इट इज़ यूज्ड फॉर स्टेनिंग स्मीयर्स मेड फ्रॉम एक्सुडेट. तो दो टाइप के सिल्वर इम्प्रेगनेशन स्टेन है, लेव अदिति फॉर टिश्यू सेक्शन के स्टेनिंग के लिए एंड फोंटाना स्टेन इज़ यूज्ड टू स्टेन स्मीयर्स. दिस इज़ द सिल्वर इम्प्रेगनेशन स्टेन. Then culture for syphilis. Treponema pallidum is not cultivable. Okay, Treponema pallidum is not cultivable, but it is maintained in rabbit testis. So it's not cultivable, but सब cultures में maintained होता है. सब cultures में maintained होता है, जैसे कि it is maintained in rabbit testis. नॉट कल्टिवेबल मतलब आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में ये ग्रो नहीं करेगा, पर सब कल्चर्स में मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि रैबिट टेस्टिस में निकोल्स स्ट्रेन. आफ्टर कल्चर serology in which antibody is detected. So for serology we have non-treponemal or STS. STS stands for Standard Test for Syphilis. Non-treponemal or Standard Test for Syphilis. In non-treponemal or STS, that is Standard Test for Syphilis, reagent antibodies are detected by using cardiolipin antigen. So reagent antibodies are detected using cardiolipin antigen. We have VDRL. VDRL stands for Venereal Disease Research Laboratory Test. Venereal Disease Research Laboratory Test. RRR. RPR. RPR stands for Rapid Plasma Reagent. RPR stands for Rapid Plasma Reagent. Then TRUST. TRUST stands for Toluidine Red Unheated Serum Test. TRUST stands for Toluidine Red Unheated Serum Test. Toluidine Red Unheated Serum Test. And then USR, that is Unheated Serum Reagent Test. USR is Unheated Serum Reagent Test. So सीरोलॉजी में एंटीबॉडी डिटेक्शन करते हैं. जो माइक्रोस्कोपी होता है वो डिफ़िकल्ट होता है, कल्चर मेथड्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो इसलिए सीरोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है. पहले नॉन ट्रीपोनीमल टेस्ट. नॉन ट्रीपोनीमल टेस्ट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर सिफिलिस और लिपोइडल स्टेन. It detects non-specific reagent antibody by using cardiolipin antigen derived from bovine heart. ठीक है, तो नॉन ट्रीपोनीमल टेस्ट में reagent antibody detect होता है and the antigen is cardiolipin antigen which has been derived from bovine heart. Okay, so non-treponemal test or lipoidal test is also known as standard test for syphilis or STS. इसमें cardiolipin is the antigen which detects reagent antibody. Example of non-treponemal test: number 1 VDRL, Venereal Disease Research Laboratory Test. RPR, that is Rapid Plasma Reagent Test. USR, Unheated Serum Reagent. TRUST, Toluidine Red Unheated Serum Test. VDRL and RPR are the widely used test and their so इन दोनों में VDRL, that is Venereal Disease Research Laboratory Test, and RPR, that is Rapid Plasma Reagent Test, are most widely used. So this is the VDRL slide,
and this is the interpretation of the test. So जो नॉन रिएक्टिव होते हैं वो नेगेटिव होते हैं. नॉन रिएक्टिव मतलब क्लम्प का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, रिएक्टिव वाले में क्लम्प का फॉर्मेशन होता है. रिएक्टिव वाले पॉजिटिव होते हैं. ये देखो, दिस इज़ वीकली रिएक्टिव एंड दिस इज़ स्ट्रॉन्गली रिएक्टिव. तो रिएक्टिव में क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी का क्लम्प्स बनता है. ठीक है, दिस इज़ नॉन रिएक्टिव, वीकली रिएक्टिव एंड देन स्ट्रॉन्गली रिएक्टिव. जो पॉजिटिव टेस्ट होते हैं, मतलब जो रिएक्टिव है, दैट इज़ इंडिकेटेड बाय फॉर्मेशन ऑफ मीडियम टू लार्ज क्लम्प्स of antigen antibody complexes which are visualized by focusing the slide under microscope on 10x. Then we have specific or treponemal test. In specific or treponemal test, specific antibodies are detected by using treponema pallidum antigens. Specific और treponemal test के example क्या है? पहला TPI, treponema pallidum immobilization test. So TPI stands for treponema pallidum immobilization test. TPI. Then we have FTA-ABS fluorescent treponemal antibody absorption test. FTA-ABS stands for fluorescent treponemal antibody absorption test. TPA stands for treponema pallidum agglutination test. TPHA stands for treponema pallidum heme agglutination test. TPPA stands for treponema pallidum particle agglutination test. So specific या treponemal test के examples क्या है? सबसे पहला TPI, that is treponema pallidum immobilization test. FTA-ABS, that is fluorescent treponemal antibody absorption test. TPA stands for treponema pallidum agglutination test. TPHA is treponema pallidum heme agglutination test. TPPA is treponema pallidum particle agglutination test. So treponemal or specific test, they aim at detecting treponema pallidum specific antibodies in patient sera by using either live or killed treponema pallidum और देयर एंटीजेनिक एक्सट्रैक्ट. तो इसमें ट्रीपोनीमम पैलिडम के स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट होते हैं और लाइव या किल्ड ट्रीपोनीमा या उसके एंटीजेनिक एक्सट्रैक्ट को एज एंटीजेंस यूज़ करते हैं. एग्जांपल TPI, दैट इज़ ट्रीपोनीमा पैलिडम इमोबाइलाइजेशन टेस्ट. FTA-ABS फ्लूरोसेंट ट्रीपोनीमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट. Then test to extract treponema pallidum. TPHA treponema pallidum heme agglutination test. TPPA treponema pallidum particle agglutination test. And the last thing is polymerase chain reaction, PCR.